Hi students, good evening to all of you and welcome to my channel. ପିଲାମାନେ after a long time ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଆମର 11th କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସର୍କୁଲେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟୁମାନ ଫିଜିଓଲୋଜିର ସେଇ ସର୍କୁଲେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ and blood's component plasma, the liquid part of blood, I have already discussed in my previous video, and today I am going to discuss about that formed element of blood. As you know students, formed element comprises of 40 to 45% of total blood, and it is RBC, WBC and platelets. So today's topic is based upon that formed elements of blood, the cellular components of blood. So students, the cells that are present within the blood, it constitute that formed element of blood, or it is the cellular component of blood. As you know, it comprises up to 40 to 45% of total blood, and first of all, more numbers of cellular component that is present in blood, that is RBC, or it is scientifically called as erythrocytes. So students, as you know, erythros means red, cyte means cells. So these are the red cells that present in blood, and it is the chief cellular component of blood. पिलेमाने ये होची मुख्य सेलुलर कंपोनेंट ब्लड रे बा रक्त रे ताहले ए फॉर्म्ड एलिमेंट एरिथ्रोसाइट बा रेड ब्लड कार्पस्कुल्स बा आरबीसी एगुडी को जनरल कैरेक्टर कोन ए मानकर शेप कोन साइज कोन स्ट्रक्चर को भलिया हाउ कैन दे हेल्प इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड व्हाट आर द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट विदिन इट एंड हाउ दे हेल्प to transport that respiratory gases, oxygen and carbon dioxide. ताले ए विषय रे हम जानिबा पिले माने फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानिबा आरबीसी रो किछि जनरल कैरेक्टर. आज यू नो स्टूडेंट्स, mammalian RBC are biconcave circular disc like and it is non-nucleated. Non-nucleated means it has no nucleus, but during its embryonic stage or during its formation, nucleus is there as it is a cell, and other cellular components like that of mitochondria, endoplasmic reticulum, they are also present within it. But later on its maturation, it loses that nucleus and mitochondria. So instead of losing that mitochondria and nucleus, it accumulates more amount of respiratory pigment, that is hemoglobin. पिले माने से hemoglobin विषय रे हम परे आलोचना करिबा. प्रथमे तार कैरेक्टर बुझिबा. ताले mammalian RBC गुडी को बाइकनकेव सर्कुलर एवं डिस्क लाइक नॉन न्यूक्लिएटेड जेहेतु सेमानकर न्यूक्लियस नाही जदिबा ये गोटे सेल एमानकर न्यूक्लियस नाही. न्यूक्लियस थिला इयरली एम्ब्रियोनिक स्टेज रे जते बेले ये परिपक्व होची मैच्योर्ड होची लूज करूची तार न्यूक्लियस आ अदर सेलुलर कंपोनेंट लाइक दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ड्यूरिंग फॉर्मेशन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन आरबीसी बट डीजेनरेशन ड्यूरिंग मैच्योरेशन प्रोसेस, अर्थात मैच्योर्ड हैला बेलको तार न्यूक्लियस को से हरौची. सो इट इज एन्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड. It is biconcave shape. Its biconcave shape increases surface area. That is why it accumulates more amount of respiratory pigment within it. That is hemoglobin. पिले में biconcave structure है कि बाजू surface area increase कला. जितने surface area increase करीबा सेते परिमाणर हेमोग्लोबिन को ये accumulate करीबा बा हेमोग्लोबिन सेते फिल हे कि रहिबा आरबीसी भीतर. More hemoglobin accumulates due to absence of that nucleus and mitochondria. Nucleated RBC are found in case of mammals like camel and llama. पिले माने camel आउ llama, llama होची दक्षिण अमेरिका रे देखा जाउथबा कुज विहीन ओट. ताले से camel आउ llama मानकर आरबीसी को जदि देखिबा दे आर आल्सो मैमल.
किंतु मामालियन आरबीसी बाइकनकेव हेतिबा बेले सेमानकर बाइकनवेक्स एवं सेमानकर न्यूक्लियस अछि, किंतु अन्य सब मामाल मानकर आरबीसी रे न्यूक्लियस नाही। सेहि पाई इट इज separated from that other mammals. Endoskeleton of RBC composed of structural proteins and fats and cholesterols. Endoskeleton which provide a rigid framework, which provide a definite shape to that of RBC, and that shape is formed due to presence of that cytoskeleton network एवं से साइटोस्केलेटन तारा स्ट्रोमाटिन गोटे स्पंजी साइटोस्केलेटन। सो एंडोस्केलेटन ऑफ आरबीसी कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन फैट और कोलेस्टेरॉल रे थियरी इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क। से नेटवर्क को कहा जाउची बिले माने स्ट्रोमाटिन। ए स्ट्रोमाटिन ता होची गोटे स्पंजी साइटोस्केलेटन जे डेफिनाइट शेप प्रदान करूची एवं ए साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क थिबा जोगु इट कैन पासेस थ्रू द नैरो कैपिलरीज। अर्थात जो ब्लड वेसल गुडाक सरू अछि बा नैरो अछि ता भितरे आरबीसी रो शेप बाइकनकेव एवं सेही शेप को कैरी करके पास आउट होबा पई आ पाखरे स्पंजी साइटोस्केलेटन दैट इज स्ट्रोमाटिन इज प्रेजेंट व्हिच help them to pass through the narrow blood vessels, that is any capillaries. So it is due to stromatin and flexible plasma membrane is there, RBC can pass through less diameter capillaries by narrow blood vessels. Mitochondria and Golgi complex absent. So due to absence of that mitochondria, anaerobic respiration carried out within it, that is the glycolysis. And Krebs cycle does not occur, and it does not require more energy for its transportation. It passes due to that flexible plasma membrane and its cytoskeletal framework. So students, single RBC is pale yellow in color. गोटे आरबीसी होची पेल येलो ईसात हळदिया रंगर, किंतु जेतबेले मेंचे आरबीसी बा ग्रुप ऑफ आरबीसी रही जिवे इट अपीयर्स रेड इन कलर, and the red color persists in that RBC due to presence of that respiratory pigment hemoglobin. पिले माने hemoglobin को respiratory pigment एथि पई कहा जाउची as it transport the respiratory gases like that of carbon dioxide and oxygen. ताले ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कैरी करूची बोली आकु कहउचे हमें respiratory pigment एवं से respiratory pigment रा नाम है hemoglobin एवं each RBC contains 26.5 crore molecules of hemoglobin. प्रत्येक RBC रे 26.5 कोटी रो मॉलिक्यूल अछि हेमोग्लोबिन रो, and molecular weight of hemoglobin molecule is 67,200 Dalton. ये होची तार molecular weight. And RBCs are composed of 60% of water. जदि composition देखिबा 60% water अछि एवं 40% solid parts present in it. पिले माने hemoglobin composed of hem and globin, and hem is the metallic part of that respiratory pigment hemoglobin, and globin is the protein part of that respiratory pigment. Hem is about 5% of total hemoglobin एवं ग्लोबिन रहुची 95%. पिले माने ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन रो स्ट्रक्चर जदि हमें जानिबा इट इज फॉर्मड ऑफ 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन एंड 2 आइडेंटिकल बीटा चेन. पिले माने 4 polypeptide chains are present in a molecule of hemoglobin, and it is also able to carry 4 molecules of oxygen. पिले माने गोटे हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4टा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करि पारे एवं ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन रे मेटालिक कंटेंट होची हेम व्हिच इज फॉर्मड ऑफ आयरन प्लस परफ्यूरिन. So hem is formed of
iron plus porphyrin, and due to presence of that porphyrin in the respiratory pigment hemoglobin, it will bring about that red color of blood. ସେଇଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ନାଲି ହେଉଛି। ଏବଂ metallic content ହେଲା କ'ଣ? iron. Iron present in ferrous state Fe+2. It is ferrous state of that metallic pigment, and it is iron, and due to presence of that porphyrin, it will bring about red color to that of blood. As you know, students, I have already discussed about the structure of that hemoglobin. So hemoglobin is formed of 4 polypeptide chains. It is formed of 4 polypeptide chains. ये जो 4टा polypeptide chain अछि ता भितरु 2 identical alpha chain is there, and that alpha chain is formed of 141 amino acid molecules. ताल अल्फा चेन रे रहिला 141 टा अमीनो एसिड एवं दुईटा आइडेंटिकल अल्फा चेन अछि एवं अन्य दुईटा आइडेंटिकल beta chain is also there, and each beta chain composed of 146 amino acids. पिले माने आहुरी मध्य जदि हमें जानिबा the polypeptide chains that are present in RBC, there are 4 different types of polypeptide chain. These 4 different types are alpha, beta, lambda and delta. Besides that alpha chain, as it is composed of 141 amino acids, all other 3 types of that polypeptide chain, they contain 146 numbers of amino acid molecule. So the structural point of view of that hemoglobin is, globin is present in the center and it is linked with 4 hem molecules, and these 4 hem molecules, as they are present in a ferrous state, and they are able to carry 4 molecules of oxygen at a time. So this is the chemical structure of that hemoglobin, the respiratory pigment that present in RBC. So students, once again, RBC is formed newly in embryonic stage before that formation of liver and spleen. It is from yolk sac. Pile mane yolk sac is an extra embryonic membrane that present in embryo in early developmental stages, which arises from the gut of embryo. It is composed of yolk sac को जदि हम देखिबा ताहले it is composed of गोटे large sac like structure, गोटे मुनि भलिया structure जार wall ता तयारी हेछि, outer wall is formed of mesoderm एवं inner wall ता तयारी हेछि endoderm. किछि एम्ब्रियोलॉजिस्ट मानक द्वारा ताहा कुहा जाइछि जे 6 सप्ताह पर्यंत एम्ब्रियोनिक स्टेज रा yolk sac form that blood vessel. ताले आरबीसी मध्य इनिशियल स्टेज रे in early embryonic stage it is formed from yolk sac, but later on after the formation of organ like that of liver and spleen, it is formed from there. So embryonic stage re liver and spleen ru tiyari hochi, later stage re and after birth it is formed of red bone marrow, hemopoietic tissue ताको कहा जाउची, जोठु ब्लड सेल गुड़ाक तैयारी होची. ताहले एमानकर संख्या जदि आमे देखिबा, आरबीसी काउंटिंग जदि देखिबा, आरबीसी काउंट हैला पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड रे केते संख्या रे आरबीसी अछि. पिले माने द नंबर ऑफ आरबीसी इज एस्टिमेटेड in embryonic stage. It is present in 7.8 million per cubic millimeter of blood, and after birth it is 6.7, just 1 million it loses that RBC. As you know students, per day
1% of total RBC is formed, and 1% of that total RBC also degenerated. So, in a healthy adult male, the RBC count is about 5.5 million per cubic millimeter of blood. ताले गोटे क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड रे 5.5 मिलियन संख्या आरबीसी रहउची एवं इट इज इन केस ऑफ मेल, बट इन केस ऑफ फीमेल इट इज अबाउट 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ताले पिले माने फीमेल माने कठारे मेल मानक तुलना अपेक्षाकृत 1 मिलियन कम रही एंड दैट 1 मिलियन लेस इज ड्यू टू दैट फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड इन ईच मंथ। सो इट इज पास्ड आउट सम अमाउंट ऑफ सम नंबर्स ऑफ आरबीसी, दैट इज व्हाई adult female contains 4.5 million of RBC in its blood per cubic millimeter। पिले माने क्यूबिक मिलीमीटर ताकू कहबा जो ब्लड ड्रॉप रो दैर्घ्य हूँ 1 मिलीमीटर, प्रस्थ 1 मिलीमीटर और हाइट बा उच्चता 1 मिलीमीटर होइथिबो। सेतिकी ब्लड रे पाखापाखी 5.5 मिलियन अछि आरबीसी मेल मानक ठारे एवं फीमेल मानक ठारे अछि 4.5 मिलियन। सो थिंक दैट हाउ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दे आर। पिले माने abnormal increase in RBCs, that is called as polycythemia. Once again students, it is important, abnormal increase in RBC count is polycythemia। आउथर मन रख पिले माने जदि आरबीसी काउंट बढ़ी जीव एई अमाउंट ठारू ताले दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीसिथेमिया। पिले माने जदि आरबीसी रो काउंट कमी जीव, सो डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, decrease in RBC count is erythropenia। ताको कहते erythropenia और पिले माने को एनीमिया मध्य कहा जाय, रक्तहीनता। आरबीसी काउंटिंग कमी गले ताको रक्तहीनता कहा जाय बा एनीमिया कहा जाय, एरिथ्रोपेनिया बा एनीमिया। पिले माने आहुरी मन रखिबा को सहज हो। इंक्रीज इन काउंट, द वर्ड एंड्स विथ मिया। इंक्रीज, डिक्रीज इन काउंट, इंक्रीज कले मिया, डिक्रीज कले पेनिया। एरिथ्रोपेनिया, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। पॉलीसिथेमिया, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। So students, RBC is formed from hemopoietic tissue, but it is degraded in an important organ of our body, the largest lymphoid organ, that is spleen. So in spleen, metabolism of that dead RBC occurs there. जदि RBC रो लाइफ स्पान आमे देखिबा पिले माने जेहेतु इटा गोटे सेल, इट हैज ए डेफिनाइट लाइफ स्पान, तार जीवन काल अछि। ताहले आरबीसी रो एवरेज लाइफ स्पान होची 120 रु 127 दिन, बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज 120 डेज। गोटे न्यूबॉर्न बेबी पाखरे 100 डेज, एम्फीबियन मानकर मध्य 100 डेज। आ जदि एम्फीबियन मानकर आरबीसी रो स्ट्रक्चर देखिबा, इट इज न्यूक्लिएटेड। पिले माने स्मॉलेस्ट आरबीसी फाउंड इन मैमल्स, दैट इज मस्क डियर। मामलियन आरबीसी भितर सबठु छोटिया आरबीसी देखा जाउची मस्क डियर पाखरे, एवं लार्जेस्ट आरबीसी देखा जाउची मामाल भितरे। इट इज फाउंड इन केस ऑफ एलिफेंट, as it is non nucleated।
नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी रे एलिफेंट मानक ठारे देखा जाउची सबटु लार्जेस्ट एवं मस्क डियर पाखरे देखा जाउची सबटु स्मॉलेस्ट। एम्फीबियन आरबीसी होची एम्फियोमा क्लास एम्फीबिया रे गोटे स्पीसीज। इट इज हैविंग द लार्जेस्ट आरबीसी न्यूक्लिएटेड आरबीसी एवं एम्फीबिया रो लाइफ स्पैन होची आरबीसी रा 100 डेज। मनुष्य मानक ठारे आरबीसी रा लाइफ स्पैन हला 120 डेज। When that RBC attain the age of 120 days, its degradation occurs within the spleen, where breakdown of that RBC occurs. That is why spleen is regarded as a graveyard of RBC. Additional blood that also stores within the spleen. That is why it is called as a reserve blood bank of our body. In case of any hemorrhagic condition, it can also provide blood for some time. That is why it is called as a reserve blood bank of our body. So students, this is all about that RBC. And one important thing is RBCs are arranged like that of piles of coins. सिंगल आरबीसी को जदि आम देखा ताहले इट इज सेमी सर्कुलर, इट इज सर्कुलर डिस्क लाइक एंड बाइकनकेव। किंतु जेतेबेले मेंचे आरबीसी रहउछंती दे आर अरेंज्ड लाइक दैट ऑफ पाइल्स ऑफ कॉइन्स। टंका कॉइन गुडा जमिति थक थक करके काउंट करा जाए सेमिति पाइल्स ऑफ कॉइन्स बा कॉइन रो स्तंभ भड़िया देखा जाए, ताकू कहा जाए राउलक्स फॉर्मेशन। The group of RBCs are arranged piles of coins that is called as Rowlocks formation. ताकू कहते Rowlocks formation. This is all about that character, structure and behavior of that RBC. And then we are going to the next formed element, that is WBC. So students, as these formed elements are having some important characters and structures and properties, that is why in a single video it is not possible to clearly explain. That is why part of this video ताले फॉर्म्ड एलिमेंट रो आरबीसी गोटे वीडियो रे देखिबो, डब्ल्यूबीसी गोटे वीडियो रे एवं प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी मिसै के गोटे वीडियो रे ताको कर दिया जिवो सो दैट तुम मानको देखिबा को सहज। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दैट फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, द इंपोर्टेंट corpuscle of blood. So if you like my video, पिले माने जदी मोर वीडियो एवं पढाइबा शैली तुम मानको भल लागुची, डेफिनेटली तुम माने सब्सक्राइब कर, शेयर कर, लाइक कर एवं प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन अल्टीमेटली तुम पाखक पहुंची। थैंक यू।